आज हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है। लेट्स स्टार्ट। परसेंटेज परसेंटेज का लिटरली मतलब होता है पर हंड्रेड। परसेंटेज स्टैंड फॉर पर हंड्रेड। अगर हमारे पास ए कोई नंबर है और अगर उसके डिनोमिनेटर में हंड्रेड है तो वी कैन से दिस इज ए परसेंट। ठीक है। सिंपली अगर हमें किसी भी परसेंट वाले नंबर को चेंज करना है तो हम हमेशा उस डिनोमिनेटर में हंड्रेड लिखेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना है कन्वर्ट, तो हम हमेशा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे बाय हंड्रेड, तो ये चेंज हो जाएगा इनटू परसेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। परसेंटेज सबसे पहले कुछ परसेंट और उनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी देख लेते हैं क्या होती है। सपोज we say it is 1 whole। 50% फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है 1/2। 25% इसकी वैल्यू होती है 1/4। 12.5% 1/8। 6.25% 1/16। सिमिलरली अगर हमारे पास परसेंट में है 75%, इसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 3/4। 37.5% ये होता है 3/8। 33.33% इसकी वैल्यू होती है 1/, 33.33 इसकी वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, फिर 9.09% इसकी वैल्यू होती है 1/11। 11.11% इसकी वैल्यू होती है 1/9। इसके अलावा और भी परसेंटेज है जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम परसेंटेज नंबर्स का किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। सो इफ वी वांट लेट्स से 20% ऑफ 800। ठीक है, सो इसको हम बहुत सारी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा बेसिक मेथड है, मेथड 1, जो आपने स्कूल्स में भी पढ़ा होगा। 20% के साइन को रिमूव करके लिख दिया 100। ऑफ का मतलब होता है इनटू 800। मल्टीप्लिकेशन है, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल, 8 2 जा 60, 160। ये है हमारा मेथड 1। नाउ मेथड 2 देखो। मेथड 2 क्या होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। मतलब ये जो नंबर हमें गिवन है ये 100% गिवन है। 800 को बोल सकते हैं हम वो 100% है। इसका 10% चाहिए तो 10% क्या होगा, यहाँ पे अगर हमने इसको डिवाइड बाय 10 कर दिया तो यहाँ से हमें 10% मिल जाएगा। अगर यहाँ डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे भी डिवीजन ही होगा। सो 10% सिंपली 80 हो जाएगा। अब 20% चाहिए तो इसको इंटू 2, 20%, 8 2 जा 16, 160। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, आपको आंसर वही मिलना है। बस आपको चूज करना है कौन सी मेथड आप। यस,
Now next, suppose we want 37.5% of 450. ठीक है, तो इस नंबर का 37.5% हमें चाहिए 450 का. सो हम किस तरह से कर सकते हैं इसको? 37.5% रिमूव किया इंटू 450. दिस विल वन ऑफ द मेथड. सेकेंड मेथड जो है उससे हम किस तरह से कर सकते हैं? 37.5. ठीक है, इसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू भी पता है. 37.5 जो होता है वो होता है 3/8 इंटू 450. और थर्ड मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेट करें. जैसे 10% है इस नंबर का, ये 100% है, तो 10% हो जाएगा हमारा 45. अगेन 37.5 चाहिए तो इंटू 3, तो 30% मिल जाएगा. कितना हो जाएगा? 135. 30%, तो ये हो गया 30%. अब इसमें कितना ऐड करना है हमें? 7.5%. ठीक है, सो 7.5% हम किस तरह से ऐड करेंगे? अगेन 5% एंड 2.5%. तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5%. 5% हो जाएगा 22.5. और फिर उसमें 5 का भी हाफ मतलब 11.25. सो ये हो जाएगा 2.5%. तो इस तरह से हमें मिल जाएगा 37.5%. या तो इस तरह से करो या तो इस तरह से करो. तो ये कितना हो जाएगा? 5, 5, 10, 8, 8, 168.8. Now next, next is 28% of 450. इसमें हमें ऐड करना है 45% of 280. सो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सी, 28% ऑफ 450, 28% ऑफ 450 प्लस दिस नंबर कैन बी रिटन एज 28% ऑफ 450. वाई? क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 28/100 इंटू 450 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा 45/100 इंटू 280. एडजस्ट करेंगे तो हमें दोनों सेम ही नंबर मिलेंगे. सो ये हो गया 2 टाइम्स 28% ऑफ 450. अब देखो 45 टू जा होता है 90. सो 900 इंटू 28/100. 0 0 कैंसिल आउट. 28 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 72. 252.
Now next, तो ये तो थे कुछ बेसिक्स. अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस. सो question number 1 is the ratio 5:4 expressed as a percent equals A 12.5%, B 40%, C 80% और D 125%. सो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. किस तरह से करेंगे हम? 5:4. This ratio 5:4 can be written as 5/4 फ्रैक्शन में. अब किसी भी नंबर को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? सिंपली इंटू 100. तो ये परसेंट में चेंज हो जाता है. 4 25 टाइम्स 25 इंटू 5 125%. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, question number 2. .5 can be expressed in terms of percentage as A 0.35%, B 3.5%, C 35% और D 350%. सो अभी डेसिमल नंबर है, उसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू परसेंट. सो हाउ विल वी डू? सिंपली 3.5 को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 100 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू परसेंट. 3.5 इंटू 100. डेसिमल से जब भी 10 100 1000 इस तरह के नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है? 350. डेसिमल हट जाएगा, एक जीरो कैंसिल आउट. सो 350%. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is question number 3 is 63% of 3/4 is, and the options are A 2.25, B 2.40, C 2.50 और D 2.75. So let's calculate.
बाय 100 इंटू मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे किस तरह से, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25 बाय 7। अब देखो 7 1 जा 7 9 जा 9 इंटू 25। अभी 100 को हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 100 से डिवीजन ज़्यादा इजी हो जाता है। 25 इंटू 9 होता है 225 बाय 100। सो आंसर इज सिंपली 2.25। 2.25 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, what is 15% of rupees 34? Question number 4 is, what is 15% of 15% of rupees 34? And the options are A 3.40, B is rupees 3.75, C is rupees 4.50, or option D is rupees 5.10. So simply हमें चाहिए 15% of 34. What is 15% of rupees 34? 15% of 34 कितना हो जाएगा? 10%, 3.4, ये 10% है, इसका हाफ 1.75%। ऐड कर लो, 7 + 1 11, 3 4 5 5.1। 15% 5.1, option D is the correct answer. Now next question number 5. Half of 1% is written as. Question number 5. Question number 5 is, half of 1%, half of 1% written as decimal is A 0.005, B 0.05, C 0.02, or D 0.2. So let's find out half of 1%. Half of 1% is half of 1%. कितना हो जाएगा ये? हाफ मतलब 0.5 को डिवाइड करना है 100 से, तो कितना हो जाएगा? 0.005, और यही डेसिमल में चाहिए। सो ऑप्शन ए 0.005 is the correct answer. Now next question number 6. Eight 60% of question number 6 is,
860% of 50 plus 50% of 860 equal to question mark, and options are A 430, B 516, C 860 or D 960. So let's solve. 860% of 50. 860% of 50. अब मैंने बोला है कि जब भी हमें परसेंटेज निकालना है तो हम इन नंबर्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं. सो इट इज सेम एज 50% ऑफ 860. क्यों होता है? क्योंकि 860 को हम लिख सकते हैं 860/100. ऑफ को रिमूव किया तो इनटू और 50 और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है. तो 50% ऑफ 860 वी नो. 50% हाफ 860 का हाफ हो जाएगा 430 प्लस हमें चाहिए अगेन 50% ऑफ 860. 50% ऑफ 860 430. कितना हो जाएगा ये? 860. ऑप्शन सी. Now next question number 7. Question number 7 is what percent of 7.2 kg is 18 grams. 72 kg का कितना परसेंट 18 ग्राम होगा? एंड द ऑप्शंस आर ए 0.025%, बी 0.25%, सी 2.5% और डी 25%. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम दोनों यूनिट्स को सेम कर लेते हैं. ग्राम एंड केजी का रिलेशन हमें पता है. 1 kg होता है 1000 ग्राम्स. सो 72 kg हो जाएगा हमारा 72,000 ग्राम्स. ठीक है. सो what percent of 72? Let's say x percent. X percent of 72,000 grams is 18 grams. Is 18 grams. So x by 100 into 7200 equal to 18. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 0 0 कैंसिल आउट. सो ये हो गया x इक्वल टू 18/720. कितना हो जाएगा ये? 18 1 जा 18 4 जा 1/40. हमें किस में चाहिए? परसेंट में चाहिए. सो 1/40. 1/40 की वैल्यू कितनी होती है इन डेसिमल? 1/4. 1/4 मतलब 0.25/10. कितना हो जाएगा ये? 0.025. ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Now next question number 8.
Question number 8 is 0.01 is what percent of 0.1? 0.01 का कितना परसेंट? तो 0.1 है. So let's say converting this into numerical language, 0.01 is, suppose x% of 0.1. So 0.01 equal to x by 100 into 0.1. कितना हो जाएगा ये? So x equal to 0.01 into 100 by 0.1. ये कितना हो जाएगा? 1 by 0.1. 1 by 0.1 means 10. Now next question number 9. What percent is? Question number 9. Question number 9 is, what percent is, what percent is 3% of 5%? And the options are A 15%, B 30%, C 50%, or D 60%. So let's solve. What percent is 3% of 5%? सबसे पहले तो 3% of 5% कैलकुलेट करते हैं. What percent is 3% of 5%? 3% of 5%. ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 50 by 100 into 100. 3% of 5%. What percent is? Let's say x%. So x% is 15 by 100 into 100. कितना हो जाएगा ये? 100 से 100 cancel out. So x equal to 15 by 100. In terms of percent, we can say x equal to 15%. स्टार्टिंग में हमने देखा था, अगर a% होता है तो वी कैन राइट a by 100. डिनोमिनेटर 100 है तो ऊपर के नंबर को हम परसेंट में लिख सकते हैं. सो x इक्वल्स टू 15%. ऑप्शन ए. So last question, question number 10.
Question number 10. Question number 10 is, what is 25% of 25% equal to? Options are A 0.00625, B 0.0625, C 0.625, or D 6.25. So 25% of 25%. 25% of 25% calculated. 25% of 25% कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 डिवाइडेड बाय 10,000. सो डेसिमल में कितना हो जाएगा? 0.1234 डिजिट के बाद में डेसिमल 0.0625. ऑप्शन B is the correct answer. So that's all about percent. We will meet in next class. Till then, bye.